Hello everyone, this is Asad Kothari and you are watching this video to see what profitability ratios are. Profitability ratios is generally a highly tested topic and profitability ratios basically आपके income statement जो आपने पहले वीडियो में देखा है इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को एनालाइज करने के लिए कुछ रेशोज़ कैलकुलेट किए जाते हैं या बेसिकली ये चेक करने के लिए दैट हाउ वेल a business is performing. You can calculate some of the profitability ratios that will help you tell that क्या उस कंपनी ने प्रॉफिट्स अच्छे किए, क्या उस कंपनी ने परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड अच्छी दी या नहीं दी. एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के अंदर इफ़ आई टॉक अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ देन देयर आर three ratios that we will have to study. One is the gross profit margin, second is the net profit margin, and third is the return on capital employed. These are the three ratios that we need to know that how to calculate and how to interpret before getting into details of the ratio analysis. Gross profit margin, net profit margin, and return on capital employed. You need to remember these formulas if you want to proceed with this video. You can copy down this example question and you can first pause this video, copy down the question, and then you can resume the video to proceed further. If I talk about this example question, then हमारे पास sales दी हुई हैं $12,000 in 2015 which were $10,000 in 2014. You must know that 2014 is on the right side and 2015 on the left side. 10,000 से प्रॉफिट हो गया है $12,000 and this is a good sign for a company because when sales are increasing this means that ज़्यादा customers को हम चीज़ें बेच रहे हैं जो कि एक अच्छा sign है. Secondly, the cost of goods sold has increased from $4,000 to $5,500 and this increase in cost of goods sold is pretty normal क्योंकि हमने सेल जब ज़्यादा की है, जब बेचा ज़्यादा है तो cost of goods sold भी ज़्यादा होना या cost related to the goods sold is obviously going to increase. The gross profit, हमें gross profit दिया हुआ नहीं है but it's quite simple to calculate. If I deduct cost of goods sold from the sales revenue, that is 12,000 minus 5,500, that will give me 6,500. And the gross profit in 2014 was 10,000 minus 4,000 and that gives me 6,000. The gross profit has actually increased, which is a very good sign. Operating expenses to 2,500 and 2,500. The operating expenses have remained the same even though मेरी sales बढ़ रही है, even though I'm trying to sell more, even I'm actually selling more. And the point to note is कि मेरे operating expenses जो हैं वो सेम रहे हैं. That is actually a very positive sign because अगर हम सेल ज़्यादा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली खर्चे ज़्यादा होंगे. आपकी मशीन्स ज़्यादा चली होंगी, डेप्रीसिएशन शायद ज़्यादा हुआ होगा या प्रॉबली ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हुआ होगा या मार्केटिंग ज़्यादा की होगी, कुछ तो ज़्यादा हुआ होगा प्रॉबली, बट स्टिल the expenses have remained the same in both the years, which is a positive sign. If I want to calculate the profit for the year, then I'll have to deduct operating expenses of 2,500 from the gross profit of 6,500. That would give me the overall profit of $4,000 in 2015, and this will give me the profit for the year of 3,500 in 2014. Overall, if I talk about the performance, the sales actually increased, the cost of goods sold also increased, and overall the profitability position has actually improved. The gross profit has increased, the profit for the year has also increased, so like we're not on the bad track, I think. But what about if we calculate the profitability ratios? कैपिटल एम्प्लॉयड जो है दोनों साल में द अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू दिस कंपनी वाज 80,000 इन बोथ द ईयर्स. लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. Okay, so first is gross profit margin. I need gross profit and sales. Okay, so I can just zoom out a bit so I can just do it easily. The gross profit for was 6,500 and 6,000. I'm going to calculate for both the years 6,500 and 6,000. And the sales were 12,000 and 10,000, as I can see, multiplied by 100 and multiplied by 100. This will give me
the gross profit of let's just use a calculator. You can also use your calculators to just keep on working with me. That will be 6500 divided by 12,000 and multiplied by 100. That will give me approximately 54%, and it was 60% in 2014. And I can just write the years for you guys so you just remember that which year we are talking about. And I'll just make a separate line so we have this clear position. Net profit margin is net profit over sales multiplied by 100. I'll want the net profits that were 4,000 divided by the sales of 12,000, whereas in 2014 say the net profit was 3,500 and the sales are $10,000. I'm just simply picking up the numbers from the numbers or the statement that I have been given. If I do 4,000 divided by 12,000 multiplied by 100, that will give me 33% approximately, and this will give me 35% approximately. That is exact. 35% is exact. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100. And is there a difference between operating profit and the net profit? So yes, there is a difference. And if you remember the video of income statements that you must have watched, operating profit is this one. See, profit before interest and tax, whereas profit for the year, net profit, is this one. ठीक है? तो generally operating profit and return on profit for the year are two different things, but for the purpose of this video, since we are just given one profit for the year, that is 4,000 and 3,500, so I'm going to use it as it is. I'm just going to assume कि profit for the year and operating profit are same क्योंकि मुझे data नहीं दिया हुआ है, but still I can calculate operating profit. I'll assume profit for the year to be operating profit, and operating profit दिया हुआ है मेरे पास $4,000, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है $80,000 multiplied by 100. Last year it was 3,500 over 80,000, the same capital employed multiplied by 100. If I divide 4,000 by 80,000, that will give me approximately exact 5%, and 3,500 divided by 80,000 will give me 4.3%. Or these are the profitability ratios that I'll have to remember, and I'll have to know that how to calculate. It's 54% and 60%, 33% and 35%, 5% and 4.3%. And if I just summarize my results, I should write the gross profit margin, the net profit margin, and the return on capital employed. You must know that GPM, the gross profit margin, and the net profit margin are not the terminology that you should remember. Return on capital employed का जो ये official term है ROCE, you can remember that, but there is no terminology like GPM or NPM. I'm just writing it for the purpose of this video. Okay, the gross profit margin, and the net profit margin. Let's just write it down. So it's a quite simple thing to analyze. 54% and 60%, 33% and 35%, 5% and 4.3%. ये वाला जो है 2015 and this one is 2014. And अगर मैं अपने रिजल्ट्स को सामने रखूँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि gross profit margin has actually decreased. Net profit margin has actually decreased. Return on capital employed has actually increased. Okay, so if I just connect the dots, initially मेरा 6,000 से जब gross profit 6,500 पे गया था तो मैंने कहा था it's a positive change. But now as I can see, the gross profit margin is actually decreasing. So that is confusing, right? Why is it happening? देखो, before I go into details, what you can just remember is काफ़ी सारे students बस इनको compare करते हैं, जैसे 60% और 54% को compare करके हम कहेंगे बुरा है. Net profit margin का decrease देखेंगे 35 से 33, तो we can say that no, it's a negative change. Return on capital,
we need, okay, you can do that. You can just write the gross profit margin has decreased from 60% to 54%, and this can be referred to as a negative change. But what you need to know is कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का कम होना और ग्रॉस प्रॉफिट का कम होना दो अलग बातें हैं. ग्रॉस प्रॉफिट तो एक्चुअली बढ़ रहा है. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. देखो, बिफोर I just talk about what the reason is, you should be able to calculate the percentage change. What is percentage change now? Percentage change अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स भी हैं तो आपको शायद आसान लगे, बट फॉर business I'll just tell you the new value minus old value multiplied by 100. This will be the new value, this will be the old value, right? So if I talk about percentage change in sales, okay, पहले मेरी percentage 10,000 सेल्स थी, अब 12,000 हो गई हैं. If I want to calculate the percentage change, that will be new value minus old value divided by old value multiplied by 100. That will give me 20%. I can say that the sales has increased by 20%. Cost of goods sold check करें. पहले था 4,000, अब हो गया है 5,500. So what I can do is I can write new value minus old value divided by old value multiplied by 100, and that will give me approximately, that will give me how much? 1,500 divided by 4,000, that will give me 37.5%. The cost of goods sold increased by, I'll just use the red sign for that because cost of goods sold काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. अगर सेल्स बढ़ी हैं 20% तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गया है 37.5%. दैट इज़ अ बिग साइन और बिग अलार्मिंग सिचुएशन टू कंसिडर. वाई? क्योंकि अगर हमारी सेल्स 20% से ज़्यादा हुई हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी 20% बढ़ना चाहिए था. इफ़ यू आर अर्निंग 20% more, then you should be spending 20% more. But why are we spending too much on cost of goods sold? That is a big question mark. That is a big question mark. ये क्या हो रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर क्या ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतनी ज़्यादा बढ़ गई? या प्रॉबेबली आपको वो मटेरियल एक्सपेंसिव मिल रहा है, या फिर कैरेज ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया है, या फिर मे बी कोई चीज़ वेस्ट हुई है. देर मस्ट बी सम रीज़न जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना ज़्यादा बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू सेल्स. इवन दो सेल्स के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाता है, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इतना ज़्यादा बढ़ना विद दिस परसेंटेज इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क. हाउएवर स्टिल वी हैव मैनेज्ड टू हैव अ इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट क्योंकि हमारी सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई. एंड but if I compare it with the gross profit margin, then in 2014 60% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था जो अब हो गया है 54%. एंड बेसिकली अगर मैं इसको यही लिखूँ, दिस इज़ मेनली बिकॉज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज्ड मच मोर than increase in sales. So gross profit margin has actually decreased, which is a negative change. Yes, net profit margin भी कम हुआ है. और अगर मैं ओवरहेड्स को कंपेयर करता हूँ, ओवरहेड्स को या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को देखता हूँ, तो it has remained the same in both the years, which is actually a positive change. एंड पॉजिटिव चेंज तो है ये, लेकिन क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 37.5% बढ़ गया था, सो द ओवरऑल नेट प्रॉफिट्स एक्चुअली इंक्रीज्ड, बट उसका इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट तक ज़रूर आया. Even though you were able to control your operating expenses, but क्योंकि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंट्रोल नहीं कर सके तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली प्रॉफिट फॉर द ईयर तक पहुंच गया.
If you would have controlled your cost of goods sold, if you would have purchased it, if you would have controlled your cost of goods sold, then you might have earned a better profit for the year. If I calculate return on capital employed, that was 4.3% last year, and this is 5 return on capital employed. What is basically ROCE? Return on capital employed. This is return. Return is what? Return is profit. And what is capital employed? It's investment. यानी कि I can say that return on capital employed is basically that how much profit a business is making on their investment. The higher the profits on investment, the better it is, right? And in both the years, I can see that investment has remained the same, $80,000, and the profit increased from $3,500 to $4,000. जब हम सेम इन्वेस्टमेंट के ऊपर ऑन द सेम इन्वेस्टमेंट ऑफ $80,000 जब हम लोग ज़्यादा कमाएंगे, तो ऑब्वियसली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी मोर, राइट? आपने सेम अमाउंट इन्वेस्टमेंट पे जब ज़्यादा कमाओगे तो ओवरऑल ROCE हैज़ इम्प्रूव्ड, इवन दो द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स and the net profit margins decrease due to poor control on cost of goods sold, but ओवरऑल आपने प्रॉफिट्स को अच्छा मेंटेन कर लिया है, और वो आपको बचाया है सेल्स ने, जो सेल्स का अच्छा इंक्रीज आया, और आपको बचाया है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कंट्रोल ने, तो जिसकी वजह से आपका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन इज़ नॉट वेरी बैड, इवन दो प्रॉफिट मार्जिन्स डिक्रीज्ड, बट the overall profits however could have been better if you would have controlled your cost of goods sold. And gross profit margin का बेसिक अगर मैं आपको लिटरल मीनिंग बताऊं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको भूल जाते हैं, लेकिन स्टिल इफ़ यू कैन रिमेंबर इट, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना दिया हुआ है मुझे देखो, 60%, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस 60%. यू कैन जस्ट राइट डाउन व्हाट एम आई सेइंग, तो अगर आप इफ़ यू कैन रिमेंबर इट तो बहुत अच्छी बात है. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वॉज $10,000, सेल्स वॉज $10,000 in 2014 एंड द ग्रॉस प्रॉफिट वॉज $6,000. ठीक है, तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि सेल्स का 60% ऑफ द सेल्स, 60% ऑफ द सेल्स वॉज कन्वर्टेड इनटू द ग्रॉस प्रॉफिट. यानी कि अगर सेल आपकी $10,000 है, जो कि 100% है, उसका 60% ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंचा है, जबकि नेट प्रॉफिट तक अगर मैं कंपेयर करूं तो 10,000 का 35%, 10,000 का 10,000 का 35% नेट प्रॉफिट तक पहुंचा है, बाकी सारा खर्चों में चला गया है. इसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन. इफ़ आई वांट टू नो व्हाट द डेफिनेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज, दिस इज the percentage of, I'll just change the color for you so it's just readable, percentage of sales that is being converted into gross profits. And net profit margin is similarly the percentage of sales converted into the net profits. कि कितना परसेंटेज आप नेट प्रॉफिट्स तक कन्वर्ट करते हो, उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन. एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज द परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन द टोटल अमाउंट invested. These are the 3 profitability ratios that you will have to remember. And for this particular video, आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को या कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए जो रेशोज़ कैलकुलेट किए जाते हैं, दैट इज़ नोन एज profitability ratios. And profitability ratios will include the 3 main ratios: gross profit margin, net profit margin, and return on capital employed. Gross profit margin basically calculates at what percentage of sales is being converted into the gross profits. Net profit margin calculates at what percentage of sales is being converted into the net profits. And return on capital employed calculates that what percentage of return you are generating on the amount invested. ठीक है, हमें इन रेशोज़ को कैलकुलेट भी करने आना चाहिए, और हमें इन रेशोज़ के बारे में
इंटरप्रिटेशन भी आनी चाहिए. वी नीड टू नो दैट द चेंज इन प्रॉफिट मार्जिन्स is not the same as change in profits. The change in profit margins is not the same as the change in profits. For a good comparison, I need to use profits as well as I need to use the profit margins. जब मैं इनको कलेक्टिवली कंपेयर करूँगा तब मैं एक अच्छा एनालिसिस दे सकता हूँ. ठीक है. I hope that you understood what the concept of profitability ratios is, and it's obviously not that easy to just get all the concepts in the first place. और जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप इसको और एग्जाम्पल्स करेंगे तो फिर ये टॉपिक के अंदर एक्सेलरेशन आ सकती है. आई होप यू आर मेकिंग योर नोट्स अलॉन्ग विद दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.